Hello everyone. A very good evening. Very good evening to all of you. So, good evening, my dear students. Am I audible and visible? If I'm audible and visible, please do let me know so that we can begin with our class. And before we begin, it's very important. ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें मतलब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर सब कुछ, है ना. विजिबिलिटी और ऑडिबल इश्यू नहीं होना चाहिए. चलो, okay. So before we start, I would like to tell you that we have got questions as of, let me just check it out. Okay, तो आज हम लोग यहाँ पर phrases के कुछ questions करेंगे, phrases से related, मतलब उनको replace करने के लिए कह लो या आप कह लो कि उनको improve करने के sense में, है ना. तो अलग अलग तरीके के questions हम target करेंगे यहाँ पर और उनको करने के लिए हम लोग try करेंगे. अच्छा बच्चों, अनअकैडमी गोल आपके बैंकिंग गोल्स को सूट करता है ऑब्वियसली, और अगर ये सूट करता है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं. बेनिफिट को, अनअकैडमी गोल को आप अवेल कर सकते हैं. इसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना. यू विल गेट द लिंक. $25% फ्लैट डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड. दैट इज़ द इनिशियल 3 लेटर्स ऑफ माई नेम RAT10. सो ये लगा करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है. एवरी मैन एंड वुमन ऑफ नागपुर हैव कम आउट टू सी द स्ट्रेंज गर्ल हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट प्री नेटल एग्जिस्टेंस. सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको सोच समझ के आंसर करें, जल्दबाजी में आंसर ना करें बच्चों. लेट्स सी. और हर क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 30 सेकेंड का टाइम लेंगे. वील टेक आर टाइम ऑफ 30 seconds. देखो, अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर एवरी वर्ड यूज हुआ है, तो एवरी इज अ वर्ड विच शोज व्हाट, सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस. कैसा सेंस देता है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देता है ना. अच्छा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देता है तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि आपका जो सेंटेंस है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को शो करने लगता है, यानी कि सिंगुलर को शो करने लगता है, यानी कि बेस हमारा कैसा होता है, सिंगुलर हो जाता है. तो अब इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर हमें सिंपली लगाना चाहिए था हैज़ कम आउट, ऑप्शन नंबर बी. अगर हम ऑप्शन नंबर बी लगाते तो हमारा आंसर सही हो सकता था. सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कंडीशन ये कहती है, व्हाट डज इट से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कंडीशन ये होती है बच्चों कि आपको उसके साथ जो जिस भी सब्जेक्ट की आप बात कर रहे होते हो उसको वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी ट्रीट करने लगता है, मतलब एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करता है. तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाती है. इसमें शैल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, केम आउट पास्ट टेंस नहीं होगा, हैज़ कम आउट हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लगाओ तो उसको ये चीज़ कंफर्म रखो कि आपने जो पहले का स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट है उसको ज़रूर चेक किया हो, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि बेसिकली बात क्या चल रही है सेंटेंस में. जैसे सेंटेंस में बात चल रही थी इंडिविजुअल्स की. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि शी हैज़ बीन अडोरिंग हर डॉटर फॉर द वॉइस विच शी इज़ गिफ्टेड. तो इसमें हमें यहाँ पर एक ऑप्शन चूज़ करना है बोल्ड का. 30 सेकेंड्स में देता हूँ आपको चूज़ करने के लिए. लेट्स सी कितने बच्चे इसका आंसर सही चूज़ कर पाते हैं.
Now, if I tell you about this particular question, here we are talking about the condition of something which is in continuous but perfect, है ना? So, if you read this sentence, it says she has been adoring her daughter for the voice which she is gifted. Now, we do not need to change the latter part of the sentence, as latter part of the sentence talks about something else. But the tense where the initial sentence starts, there has to be some changes are supposed to be made. Supposedly, you say कि she has been adored, or she has adored, or shall adore. No, these options won't make such sense, which actually is required in the question. So, what is better? Suggest advisable for you to go for NCR, which is option number 5, and which would be the correct answer. Are you getting my point? So the correct answer would be simply using perfect continuous tense. That is future, but not future, but it is present perfect continuous tense. So Radha has been adoring her daughter for the voice. Now, if I say Ravish sent all the furniture to Patna that he had brought in Chennai, so how would you make the sentence to make this statement correct? Framing of the sentence is always very important, so make sure that you frame it in a correct way. In this sentence, we can say कि send all the furniture to Patna या send to Patna. So first हम क्या कहेंगे, जहाँ भेजा गया है ना. सेंट के बाद आपको जो जगह भेजा गया है वो बोलना पड़ेगा. सेंट टू, यहाँ पर आ जाएगा प्लेस, जिस जगह भेजा गया है ना. सेंट के बाद आप टू लगाओगे, टू के बाद जो प्लेस है वो लगाओगे, और उसके बाद आप यहाँ पर एडजेक्टिव लगाकर आगे का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो ऑल द फर्नीचर करके. ठीक है. और दैट बॉट इन चेन्नई, आपका सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा अगर आप इस बेसिक तरीके से चलते हो. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो, एवरी ऑफिसर एवरी रेजिडेंट ऑफ द विलेज इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट टू गेट बेटर रैंकिंग इन द सैनिटेशन इंडेक्स. ये सेंटेंस अच्छा है, आप इसको रीड करो पहले, है ना, फिर आप इसमें से रिलेट करना कौन सा ऑप्शन सूट करता है. करेक्ट. आप यहाँ पर कह सकते थे कि, एक सेकेंड, हाँ अमित, आपका आंसर सही है. इस सेंटेंस में आप कह सकते थे कि एवरी ऑफिसर एंड एवरी रेजिडेंट ऑफ द विलेज इज डिटरमिन्ड टू डू हिज बेस्ट. ऑप्शन नंबर 3 कह सकते थे हिज बेस्ट. हिज बेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आप एवरी की बात करते हो तो सिंगुलर हो जाता है ना.
ठीक है। अब जैसे ये है, नाउ डेज ही टीचर्स मैथमेटिक्स बिकॉज द मैथमेटिक टीचर इज एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। तो ये बताओ इसमें क्या आंसर लगाओगे? वंस अमित जो आता है ना वो वन वंस के साथ आता है, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ ऐसे करके बोलते हैं ना, वन ड्यूटी वंस ड्यूटी। आवाज दो बार आ रही है? आप चेक करो अमित, एक बार आवाज सही आ रही है कि दो बार आ रही है, एक बार चेक करके कंफर्म करो। वैसे एक ही बार आनी चाहिए, दो बार आवाज कैसे आ रही है? है ना? चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। नाउ डेज, नाउ डेज के साथ क्या आता है? कॉन्टिन्यूस। ही टीचर्स नहीं आएगा, नाउ डेज ही इज टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट माना जाएगा, सिक्स का। अब इंडिया एंड चाइना's present conditions clearly indicate that both countries will soon emerge as Asian superpowers. इंडिया एंड चाइना's present conditions, अब देखो। ओके, अमित ने इसका आंसर टू लगा दिया है। बिल्कुल सही जवाब इसका टू होगा, क्योंकि हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगा करके सेंटेंस को बता पाएंगे कि इंडिया एंड चाइना's प्रेजेंट कंडीशन बोथ। तो बोथ की बात हो रही है तो हम सेकंड ऑप्शन को ही चूज करेंगे। कह रहा बिफोर ही हैड रीच्ड द स्टेशन द प्लेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। अब इसका आंसर चूज करो। अमित ने आंसर टू लगाया। अमित, इसका आंसर ही हैज रीच्ड के बजाय कहना चाहिए था बिफोर ही रीच्ड, क्योंकि आप बिफोर के साथ पास्ट परफेक्ट नहीं, बिफोर सिंपल पास्ट लगाओगे ना, तो आंसर इसका वन हो जाएगा। हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा अमित, इसलिए गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। तो आपको ऑप्शन नंबर वन यूज करना चाहिए था।
अब ये जैसे some media organizations and analysts have mistakenly described the council as having adopted a resolution. इसका क्या आंसर बनेगा? ओके, कोई बात नहीं. अब बताओ. ओके, वेरी नाइस. अमित ने आंसर 1 लगा दिया है. और इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है. सिंपल तरीके से देखना है, जैसे एनालिस्ट की बात चल रही है ना. तो आपको इसमें चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं है अमित, क्योंकि बेटा ये प्लूरल है. एनालिस्ट की बात चल रही है ना. देखो एनालिस्ट ये वर्ड कैसा है? प्लूरल है. और प्लूरल के साथ कैसी वर्ब लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी कि चेंज करने की जरूरत नहीं है. इसका ऑप्शन आ जाएगा 5 करेक्ट आंसर. ठीक है. अब as it was the most awaited match and I had to reach on time, I found myself in a distress when I got stuck in the family issues. अब इसमें दोनों ऑप्शंस के हिसाब से चूज करना है. अब सोचो जरा इसका आंसर. चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे करना है. इसका आंसर वैसे बच्चों ना आपने जैसे सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि शायद थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर. और इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन होगा अमित. बताऊँ कैसे? क्योंकि ये हो जाएगा एज इट इज़ द मोस्ट अवेटेड मैच
इन अ डिस्ट्रेस व्हेन आई गॉट स्टक इज द मोस्ट. अब इसमें तो इज आ गया, इसमें आ गया वॉज अ मोस्ट अवेटेड मैच इन द डिस्ट्रेस व्हेन आई गॉट. तो आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जा सकते थे इसका राइट आंसर लगाने के लिए. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट कोई बात नहीं, इसको पढ़ो. इसको मैं देता हूँ. ऑल्दो शी हैड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स दैट शी हैड गॉन फॉर हेल्प टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स क्लास. आगे कैसे इससे रिलेट करोगे आप? ट्राई किया? मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है. सेंटेंस में लिखा है ऑल्दो शी हैड इन्फॉर्म्ड. Although she had informed her parents that she had gone for help to one of her friends class. तो क्या कह सकते हो? चलो, अब इसमें आप अगर सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होता कि ऑल्दो शी हैड इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स दैट शी हैड गॉन फॉर हेल्प टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स क्लास. तो आप कहते हैं वन ऑफ द क्लासेस ऑफ हर फ्रेंड्स एडवाइस बट समबडी एल्सेस. क्योंकि इसमें पता दोनों चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा बच्चों. और अगर आप दोनों ऑप्शंस को चेंज नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा. इस वाले क्वेश्चन का, पर्टिकुलरली इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू शुड गो विद द सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ही आपको सही ऑप्शन मिल पाएगा. जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टू वन ऑफ द क्लासेस ऑफ हर फ्रेंड एंड फ्रेंड्स एडवाइस apostrophe shall be used, and after that you can say that कि okay. ठीक है. Gayatri, your answer is right. Good evening, beta. Now, if we talk about the next question, let's proceed. It says Lok Sabha had passed the insolvency and bankruptcy bill allowing the individuals and corporate firms to announce their state of being insolvent or unable to pay financial dues. The bill had seek to solve the long pending issue of overseas assets and promote entrepreneurship in India. Read it first. अच्छे से रीड करो, उसके बाद सोचो क्या हो सकता है इसमें. Gayatri wants to go with the option number 4, I think, है ना? Okay. मैं आपको सबसे पहले
बताता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है गायत्री, योर आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन नंबर 4 सजेस्ट यू द राइट थिंग. Perfect answer. Lok Sabha has passed the insolvency and bankruptcy bill allowing if bill seeks to solve. Only the option bill seeks to solve the long pending issues would be correct. Fourth is perfectly fine. Now question number next. It is noticed that Indian middle class have been wiped out by the cost of living far outpacing salaries. Most of the news concerned to that have been communicated by the studies conducted by various well-known non-governmental firms. Okay, let's try this. Okay, अमित ने आंसर 1 चूज किया है. एनी अदर ऑप्शन? गायत्री वांट्स टू गो विद. अब मैं आप लोगों को बोलूंगा एक बार थर्ड ऑप्शन पढ़ो. अमित आप भी. इंडियन मिडिल क्लास हैज बीन वाइप्ड आउट. आपको पहली बात तो हैज बीन यूज करना पड़ेगा हैव की जगह पर, ठीक है, सिंगुलर होने की वजह से, और पैसिव वॉइस है इसलिए भी आपको हैज लगाना ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं. और हैज़ बीन कम्युनिकेटेड आपको बोलना पड़ेगा, दोनों बातें हैं. It is noticed that Indian middle class has been wiped out by the cost of living for far outpacing salaries. Most of the news concerned to this has been communicated by the studies. दोनों में लग जाएगा तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का. अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे. आफ्टर द लेपर्ड नेम सचिन फ्ली, इससे शुरू करेंगे, तो इसको एक बार आप पढ़ो और फिर बताओ क्या इसका आंसर बनेगा. Your answer was right, Gayatri. So let's try this one, as this is a bit different. Very nice. Gayatri wants to go with the option number 4, I think. And Amit, आपका आंसर? चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर. देखो यहाँ सबसे पहले ये वाला पार्ट तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है तो सही लिखा है, यहाँ से चेंज करना था हमें, यहाँ से. तो फ्ली नहीं होता है, फ्लड होता है ना. फ्लड भाग जाने की पास्ट फॉर्म होती है फ्लड, टू रन अवे, है ना, फ्लड. तो फ्लड यहाँ पर दिया हुआ है. और नेक्स्ट पार्ट है अथॉरिटीज सेटअप अराउंड, ये तो सही है. फिर हमारा यही पार्ट चेंज हो जाएगा और सेंटेंस ए में एरर मिल जा रही है. ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन नंबर 1. ये वाला ट्राई करते हैं. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोब इज जांच एंड रिड्यूस पेंडिंग केसेस इन द पुलिस स्टेशंस, ओडिशा पुलिस हैव assigned investigating powers to graduate constables
आगे का पार्ट फिक्स है, उसको चेंज करना नहीं है, तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या हो सकता है इसका आंसर. व्हाट वुड यू से? साफ साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखते बच्चों तो आप लोग को एक चीज़ पता चल जाती कि सर यहाँ पर ये क्यों लिखा है इन्होंने कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोब, ये जो लिखा है ना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोब, जांच की क्वालिटी, एंड रिड्यूस पेंडिंग केसेस. एंड नहीं होगा, यू शुड से टू रिड्यूस. तो गलती यहाँ पर है बी पार्ट में. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोब टू रिड्यूस पेंडिंग केसेस इन द पुलिस स्टेशन, ये इसका सेंटेंस बनना चाहिए था, पता आपको. अब जैसे ही लिखा है, अ प्लेग एट रेलवे ओवर ब्रिज इन भोपाल बेयरिंग द नेम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान वाज फाउंड डिफेज्ड ट्रिगरिंग अ प्रोटेस्ट बाय बीजेपी. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ. Yes, your answer was right, Gayatri. B was the answer in that case. Now tell me this one. Okay, बिल्कुल सही आंसर दिया है गायत्री. योर आंसर शुड बी इन, नॉट ऑन. इट शुड नॉट बी इन फ्राइडे, इट शुड बी ऑन फ्राइडे. यस, तो सही आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है इस बार. Now this one. CBI's counsel Rajiv Kumar on Thursday said Prasad should not be given regular bail and referred to denial of bail to him previously in the case of related to Devgat Treasury. Gayatri wants to go with the B option. Gayatri, if you take this dear sentence, it says CBI's counsel Rajiv Kumar said Prasad Shah should not be given, which is right, regular bail and referred to denial of bail to him previously in the case of Devgat Treasury. Its sentence is right. I think we should go with the option number 5. Sentence is grammatically correct. There is no issue. If you read it properly and you just find that the sentence has no error as such. The sentence seems right. No?
Let's check out this sentence. The working paper by a research institute confirms that the Swachh Bharat mission has driven toilet construction, although its findings are more modest than government claims. Okay, we can try this as well. B option. Okay, okay, right. So बिल्कुल सही बात है, इसमें गलती पता चल रही है. We can find there is some issue with this sentence as it is talking about has driving. The Swachh Bharat mission has driving, has driven, it should be na, a working paper by a research institute. No, has driven is right. Has driven is right. No, no, no. Gayatri, we are not using this one. Correct one, because the error is in the part A and this sentence is right. Has driven. So why we are supposed to say has driving? है ना? Why we are supposed to say has driving? Whereas when we have got the option driven. Now the next question is with a blank dash. When I called back to head office 100 miles away, hardly had I arrived. Hardly I had arrived. I had arrived there. Which one? Okay, Gayatri wants to go with the B option. Nice. It should be like for this question, I suppose hmm, we can say both 1 and 3 are correct. No, you know why? Uh, hardly had I arrived there. Look, पहला ऑप्शन भी सही है. Hardly had I arrived, or I had arrived there when I was called back to the head office. ये भी सही है. My birthday was also did sorry dash my birthday, but also did not apologize for forgetting it.
My birthday, but also did not apologize for forgetting. Any logical answer, students? Any logical one? Only three. Amit says four. Uh, Acha. Only three you think, huh? Why three? What do you think? What do you say about both one and mm, both one and two? अच्छा क्यों वन एंड टू क्यों बोल रहा हूँ मैं ये वाला ऑप्शन आंसर थ्री इसलिए समझते हैं इसको एक बार कि शी डिड फॉरगेट नॉट ओनली माय बर्थडे बट आल्सो डिड नॉट अपोलोजाइज है ना ठीक है so she did forget my birth she did forget not only my birthday but also did not apologize तो ये verb बराबर हो गई ना there is a balance of verbs एंड जो सेकेंड ऑप्शन है नॉट ओनली डिड शी फॉरगेट तो ये भी सही है नॉट ओनली के बाद आप डिड यूज कर रहे हो क्योंकि बट ऑल्सो के बाद आप डिड नॉट यूज कर रहे हो तो दोनों सही हो गए तो इसलिए स्टूडेंट्स वी आर सपोज टू गो विद द थर्ड ऑप्शन अगर आप थर्ड ऑप्शन लगाते हो तो एक बेटर आंसर ऑप्शन माना जाना चाहिए आपका है ना चलो अभी ट्राई करते हैं The innovation of brilliant minds dash an amazing technology such as space flight or internet. The innovation of brilliant minds. Gayatri wants to go with the first option. Fine. First option reads is what grants humanity. The innovation of brilliant mind is what grants humanity. Perfect. Perfect answer. सही आंसर है बिल्कुल सही है क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन सेट नहीं है अदर ऑप्शंस आर नॉट सेट perfect answer Amit your answer is also right she handed me the exhibit dash with her to deposition sorry to deposition Gayatri wants to go with the fourth option है ना fourth means 1 and 3 she handed me the exhibit which she brings with her to deposition
आप गायत्री look at the tense of the sentence. Why we shall go with present indefinite if the sentence is of past? I think this should not be. I think we can use past perfect or past simple both. So with this we can say both 2 and 3 are correct. No, I think which she brought won't be right even. है ना? Only past perfect would be sufficient. How? The first part, initial part of the sentence is already in simple past. Na? She handed V2. So other part of the sentence would require had plus V3, which is given in only second option. So only second option is true. Na? If you want to go, you can go with only second option, as this is only the sentence which talks about past perfect. Rest of the options are not like feasible. Now we will try this one. The state carries the burden of proof, meaning dash suspect guilty rather than the lawyer proving him innocent. A different case. Fourth option. Okay. Can we say the lawyers have to prove? Like if I say the state carries the burden of proof, meaning lawyer has to prove, a lawyer had to prove, or are they talking about every lawyer? So they want to say lawyers have to prove. Yes, they are not talking about singular, any single person or any single entity. This particular lawyer has to prove or something like that. I suppose they are saying the state carries the burden of proof, and say in the state, every lawyer comes under the category. So you preferably go with the option number three, which says the lawyer have to prove. Every lawyer may be the suspect guilty rather than guilty. Lawyer proving him innocent, na? So better we go with option number three. Yes, and only 3 is given in the second option, so second, right? Yes. Now we have got a different question with the unique thing, like a highlighted word has been given and you have to just choose out of one. Gayatri wants to know how to find singular or plural. Dear, it's like it depends. Huh? Like in the previous sentence, we were talking about lawyer. So if a noun has s with it, any noun, say suppose Gayatri, we are talking about a boy. So boy is without s, so it's singular. If I say boys, it means plural because it is a noun. है ना? Same goes with the word lawyer. Lawyer is a noun. So if I say it without using s, so it's a singular word. If I say lawyers, so it becomes plural. Lawyers, many lawyers, isn't it? The same goes with boy, girls, anything. In the case of noun, you add s, it becomes plural. Not with the verb, only with the noun. In case of verb, it is opposite.
Acha, Gayatri wants to go with the fourth option. I just want to tell you that inducing word, the word inducing actually means to succeed in persuading or leading someone to do something. है ना? What does it like tell? Inducing is a word we use particularly to say that it is like to succeed, succeed in leading someone, leading somebody, to succeed in leading somebody. Votes of religious conservatives could decide the election, and all the candidates are inducing for their support. So, which option can we go with? Angling for. Why? 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 What does it mean? Angling for? Angling for is a word which simply means like accurately depicting the meaning of the word inducing. In the same way, when you just induce someone or promote someone. Is it clear? So yes, so this way we can say that third option was right. Now we have got this question. We became so bored while the professor gabbled at us. I nearly fell asleep in the middle of the. It should be felt. Felt asleep in the middle of the lecture. Okay, not an issue, Gayatri. If you have some confusion, you can ask there. But I will be telling again. Okay, you want to go with third? Match up? Okay. Acha, do you know what is gabbling? Gabbling, dear, it's a word which means talking consistently, right? Constantly, and that too rapidly when you are talking. When you are talking rapidly, means लगातार लगातार बस बोलते जाना. Talking rapidly, that too unintelligibly, unintelligibly, unintelligibly. Have you heard the word unintelligibly? Unintelligible is like something where you talk not sensible, है ना? So which option would be better? Jawed away. It may give you the sense like talking rubbish in sense, not accurate. Basically, gabbling is like बड़ है ना? तो बेमतलब वाली talk kind of. Okay, so next one. It says they have introduced a compact edition of the newspaper and are discarding gradually the broadsheet edition over the next few months. Paying off, picking up, picking at, phasing out. All options are nice. Discarding is the word which means like to get rid of something. Have you heard get rid of something? So discarding gradually is get rid of something.
Okay, Gayatri wants to go with the option number 2, which is picking up. Picking up, paying off. Okay, picking at. Okay. Let me tell you. So first of all, I would tell you that paying off means to yield good results. Paying off means to yield good results. Okay. Now the next one, which I must tell you, picking up is to improve, like increase, increase or improve. And now there is a word picking up. Sorry, picking at. Picking up, picking at is like to eat food in a small pieces without enjoyment. When you eat food without enjoyment. That is known as picking up. Phasing out is like when you say ki, what would you say? Phasing out is discontinue. In easy word, if I say discontinue, okay? Is it fine now? Okay, okay. So correct answer should be by three. It should be option number four. है ना? Option number four is right because they were talking about discarding gradually. So phasing out is discontinue, है ना? To discontinue. Next one we have got is people would roll their eyes as if it was a far-fetched theory. Just about 20 years ago, if someone talked about climate change, people would roll their eyes. You have to tell the meaning of this particular phrase or idiom. Not idiom, but phrase. People would roll their eyes. What does it mean? In which option the answer is given? You have to check it out. Okay, Gayatri says it should be two. Okay, dear, let me tell you that it is like if somebody asked and talked about climate change, the people would think that it is nonsense and it is if it was an implausible thought. Implausible means जो संभव ही नहीं है, possible ही नहीं है. तो लोग ऐसा सोचते थे. It was nonsense. People think. तो ये पहला वाला हो सकता है. But ये तीसरा भी हो सकता है. If you see the sentence, it says people would get bored as if it was an unconvincing prophecy. लोग सोचते थे ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता. Climate change and all. What does it mean? तो आपको कहना चाहिए था कि हाँ सर बोथ आर करेक्ट. वन एंड थ्री बोथ आर करेक्ट, है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, विच इज राइट. ठीक है, समझ आ गया? ये थोड़ा लेंदी सेंटेंस है. चलो कोई नहीं बच्चों, अभी इसको यहीं तक रखते हैं. आज हम लोग टुडे वी विल मीट एट 6. आज 6 बजे आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एडवांस लेवल के होंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे. तो बी रेडी एट 6 o'clock टुडे, है ना? आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे. दोज क्वेश्चंस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस लेवल ऑफ आरआरबी, आईबीपीएस, पीओ एंड क्लर्क, है ना? सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टिल नाउ and we'll meet at 6. So don't get late. Bye bye, take care.